Welcome for our present discussion for class 12 accountancy. We are making our journey with the chapter accounting ratio. Till now 20 episodes already I have discussed regarding the accounting ratio chapter. We are going to end in 1 or 2 episodes more to end this chapter. Yesterday, in the previous episode number 20, I have started to discuss the profitability ratio. Under profitability ratio, there are 5 types of ratios. One is gross profit ratio. Second one, operating ratio. These 2 ratios I have discussed in the episode number 20. Now I am before you 21 number episode for chapter accounting ratio, and now I will discuss net profit ratio before you. These 2 ratios already discussed, gross profit ratio and operating ratio already discussed. Now we will discuss regarding net profit ratio. Net profit ratio formula is net profit by net revenue from operation into 100. That means we need net profit and we need net revenue from operation. Net revenue from operation, we know that cash revenue from operation plus credit revenue from operation minus revenue return. That means revenue from operation means the sales. How much amount of goods we have sold on cash, how much amount of goods we have sold on credit. Total of this is treated as the revenue from operation. And if any amount of goods are returned from the customer, that is the sales return or the return inward or the revenue return, that will be minus. Then we will get net revenue from operation. And we need net profit. Now, directly net profit, directly net revenue from operation will not be given in the question. But some other items or whatever clues will be given in the question, whatever items will be available in the question, we have to bring out through those sources the net profit amount and the net revenue from operation amount. Then easily we can calculate the net profit ratio. For that purpose, we should have the knowledge of profit and loss account, whatever we have prepared in the 11th class financial statement chapter, final account chapter we have done. Just I am reminding you, we have done PL account previously. This is the debit side, this is the credit side. If there is the gross profit, so in the credit side we have written gross profit, amount is here. All indirect income
were coming in the credit side, all indirect expenses were coming in the debit side, and whatever was the total of credit side, that total amount we have put in the debit side total, and whatever amount will be minus and balance amount, this balance amount will be called net profit. So this net profit we need for the formula. So if in the question gross profit amount is given and few indirect income item and amount is given, and few indirect expenses item and amount is given, then we can form a formula of net profit. In which way? Gross profit plus indirect income minus indirect expenses. Suppose in the question salary is given, interest paid given, rent paid given, commission received given, discount received given, gross profit given. So we can calculate the amount of the net profit like this: gross profit amount plus commission received amount, discount received amount, whatever indirect income will be given, that will be added, and salaries, interest paid, rent paid, discount allowed, whatever the indirect expenses, those will be subtracted. Then we can calculate, we can get the amount or value of net profit. Then that net profit amount we can put in the formula of net profit ratio. So in this way 2-3 sums are given in the book, we can do. So this will be coming, answer will be coming in the percentage form, as because we are multiplying here by 100. Okay. So next I am coming for the operating profit ratio. Next, number D, operating profit ratio. The formula is operating profit by net revenue from operation into 100. I will not tell anything about the net revenue from operation more, because many times I have discussed this, and for many types of ratios it was needed to us, and I think previous episodes you have followed, and previous ratios also you have calculated, you have done the sums. So I think you know how to calculate the net revenue from operation. Now our new thing is coming, operating profit. Now look at here, formula of operating profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है. नंबर 1 फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. It is one formula, and another formula is there, but I think that formula is not given in the book of your syllabus right now. If needed, then I will discuss later on, but right now you keep in mind the gross profit minus operating expense plus operating income. Another formula, okay, I am writing it, just follow this. Net profit, another formula for the operating profit. Net profit plus non-operating expenses minus non-operating income.
non-operating expense minus non-operating income. Now, question is, in the final account we have seen that the direct expense, direct income, indirect expense, indirect income, trading account, PL account, whenever we have done. But right now the time has come before us to know about the operating income, operating expense, non-operating income, non-operating expense, like this. So what are those? Operating expense means the expenses which are related with the day-to-day operation of the business. बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है जो एक्सपेंस, उसको बोलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ट, कोल, वाटर, गैस, फ्यूल, whatever direct expenses in the trading account debit side, all those direct expenses are called the operating expense. But whatever indirect expenses are in the debit side of PL account, all those indirect expenses are not the operating expense. उनमें से कुछ कुछ एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो कुछ कुछ एक्सपेंस है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. जैसे कि सैलरीज, कमीशन पेड, रेंट पेड, ये सब हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बिकॉज सैलरीज पेड, इसका मतलब है एम्प्लॉयज को जब सैलरी दिया जा रहा है तब जरूर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है. जब कमीशन पेड कर रहे तब जरूर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है. रेंट पेड कर रहे तो जरूर बिजनेस, रेंट में भाड़ा लेके बिजनेस किया जा रहा है. लेकिन इंटरेस्ट पेड, ये आइटम जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज मशीन ऑपरेट हो चाहे ना हो, डेप्रिसिएशन शो होगा ही. इसका मतलब है मशीन ऑपरेट नहीं भी हो सकता है लेकिन डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इंटरेस्ट पेड, लोन लिया किसी से, बदले में इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो लोन लिया उसके बाद मेरा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंटरेस्ट पेड इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. उसी तरह कुछ ऑपरेटिंग इनकम होता है और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होता है. जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में सेल्स है, वो डायरेक्ट इनकम है और वो ऑपरेटिंग इनकम भी है. और पीएल अकाउंट का क्रेडिट में जो आइटम आता है, कमीशन रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, all these are the indirect income, but out of these indirect incomes few are operating income, few are non operating income. जैसे कि कमीशन रिसिप्ट, जरूर हम बिजनेस कर रहे हैं और किसी कंपनी का सामान को सेल करने के ऊपर बेस करके हमारे कंपनी को, हमारे बिजनेस को कमीशन मिलता होगा, तो कमीशन रिसिप्ट इज द ऑपरेटिंग इनकम. बट इंटरेस्ट रिसिप्ट, हम किसी को लोन दिया, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट के साथ मेरा बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन का कोई संपर्क नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाता है. रेंट रिसिप्ट, बिजनेस का एक घर एक्स्ट्रा है, बिजनेस के नाम पे जो रूम्स हैं उनमें से एक रूम एक्स्ट्रा है जो भाड़ा दे दिया गया, रेंट में दे दिया गया किसी को, वहाँ से जो रेंट मिलता है वो हमारा बिजनेस का ऑपरेशन के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. तो इसी तरह आपको ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को समझना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन में जो आइटम रहेगा उसके हिसाब से आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन में हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. और अगर हमको कुछ नेट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दे दिया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का इंफॉर्मेशन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का इंफॉर्मेशन दिया, तो आई हैव टू थिंक दैट आई हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड देन आई कैन प्रोसीड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग
profit ratio. So these two types of ratios I have discussed in this episode. One is net profit ratio, another is the operating profit ratio. So listen this properly and try to do from the books and from the question given in the practical part also. Thank you very much.